स्टूडेंट। अभी मैं हैरियट-वाट यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर आया हूँ। आपको बताता हूँ मैं कि यहाँ पर अगर बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन लेने के लिए 12th के बाद कहीं से अगर यहाँ पर लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक हैरियट-वाट यूनिवर्सिटी का टूर करा देता हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ये हैरियट-वाट यूनिवर्सिटी है। ये आपको मैं इसका टूर करा देता हूँ ताकि जो है बच्चे जो भी एडमिशन लेना चाहें वो आपको मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए दोस्त, ये हैरियट-वाट यूनिवर्सिटी है, कितना प्यारा है। और ये अलसफू एरिया में है। अगर अलसफू आते हैं तो ये हैरियट-वाट यूनिवर्सिटी जो है ये अलसफू में है। इसके अतराफ़ भी है, चारों तरफ भी इसके यूनिवर्सिटी है। जैसे ये हैरियट-वाट यूनिवर्सिटी है और ये आपको जो है ये इसके जस्ट सामने यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग इन दुबई है। तो आपको मैं एक कंप्लीट टूर करा देता हूँ, आप देखते रहें हमारे साथ। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। पूरा अंदर का इलाका है ये। और कॉफ़ी वगैरह भी है, केफ है ये। आप कैफे में जो है चाय कॉफ़ी भी मिलती है। बेसमेंट में पार्किंग है, पार्किंग करें आप। पार्किंग कर कर जो है आप ऊपर आ जाएं। हेलो, this is maybe office. This is here.
Internet, everything is there. Bicycle, scooter, everything is available. Heriot-Watt University. Next is University of Scotland. I will show you when I will enter to the office. I will show you more. So you will have full University of Lango. इसकी ऑफिस जो है वो ब्लॉक 8 में है। जब आप हेरियट-वाट यूनिवर्सिटी में आएंगे तो ऑफिस जो है ब्लॉक 8 में ग्राउंड फ्लोर पर है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा आप जो है वो ऑफिस में आप बात कर सकते हैं वहाँ। तो आपको मैं ले चलूँगा अंदर ऑफिस तरफ भी। The office is this side. Heriot-Watt University. Every job here. You can see pictures here of me cleaning loos and working job in the building for about the first 2 months that I was here, including sitting, by the way, in every different departmental set of lectures, so I could see how good everybody was at teaching. I will tell you that the only thing I was absolutely terrible at, which is not a photograph of, was cooking for the students. I was absolutely terrible at cooking noodles. And I do remember one student came to me at the time, because in those days, you remember we were masks, it was September 2022, and one of the students said to me, where do you come from? And things like the Chartered Institute of Business and Structural Engineers, CIBSE, these are the Institute and Faculty of Actuaries is a UK operation, that CIBSE is a global one, the CFA Institute is a global one, and SEMA. I mean, I'm a SEMA. I'm a chartered accountant as well. I'm a management accountant, and then the UK government run an independent survey to check up on where they are 18 months after they graduate. And we came #1 in Scotland this year, and #2 in the whole of the UK. There are 146 universities in the UK, and our graduates are doing better than, and this is, I'm not surprised, I'm pleased, and I'm not surprised,
because we're not offering every single degree. You know, we're not, our students are not going on to not very well paid jobs because they've all come